All yours. ठीक है, थैंक यू। हाय एवरीवन, मेरा नाम डैरिल है। मैं एक रिकवर्ड मेंबर हूँ अल्कोहलिक अनोनिमस का। एंड थैंक यू स्मृति। आई जस्ट फील कि द वे यू आर कंडक्टिंग द मीटिंग दैट इज वेरी प्रोफेशनल। बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुन के। सो जो मेरा आज का टॉपिक है, आई ए 12 स्टेप्स, द डिफरेंस बिटवीन sobriety and recovery. आई मीन दिस इज इट टुक मैं हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बोलूंगा। आई होप एवरीवन इज फाइन विद दैट। इस चीज को समझने में मुझे कुछ टाइम लग गया कि रिकवरी क्या होती है, सोब्राइटी क्या होती है। मैं जब मीटिंग रूम्स के अंदर आया था बैक इन द डे, सो मेरे को लगता है 1 साल लग गया था मेरे को रूम्स में आते आते सोब्राइटी मिलने में। सो मैं 1 साल के अंदर लगभग मैं सोबर हो गया था। आई होप मेरी आवाज क्लियर आ रही है, बहुत हल्की तो नहीं आ रही है। आई जस्ट वांट टू कंफर्म। It's all good. ठीक है ठीक है, बस. ओके, ऑलराइट, ग्रेट। सो 1 साल लग गया था मेरे को। उसके बाद मतलब जैसे बोलते हैं ना कि प्रोग्राम ऑफ रिकवरी इज सजेस्टेड। सो वैसे होम ग्रुप में मेरे जो सजेशन की तरह ही लिया गया था। एंड बहुत सारा मतलब इम्फेसिस कभी नहीं दिया गया कि भाई ये स्टेप वर्क है और करना है स्टेप वर्क करके। बट हाँ, टू डू रेगुलर मीटिंग्स वाज समथिंग लाइक कि हाँ, मीटिंग से ही रिकवरी मिलती है, विच इज ट्रू टू सम एक्सटेंट बट नॉट entirely। सो मैंने मीटिंग्स करी एंड मुझे रिकवरी मतलब मुझे सोब्राइटी मिली कुछ टाइम के अंदर। 1 साल के बाद 1 महीने के अंदर मेरे को सोब्राइटी मिली। लेकिन मुझे किसी ने ये चीज नहीं बताया कि जब मैं सोबर हो जाऊंगा बहुत सारी चीजें, आई मीन आई वोंट फील बेटर। आई मीन हाँ, थोड़ा सा ये टंग ट्विस्टर है बट आई थिंक दिस विल रियली ब्रिंग माई आइडिया होम। दे सेड कि I'll feel better, but what they did not tell me that I will feel anger better, I will feel resentments better, I will feel fear better, I will feel self pity better। ये जो मेरे सारे इमोशंस जो पहले मैं अल्कोहल पी के यूज करके यूजिंग के अंदर नम कर देता था एंड मेरे को लगता था कि भाई कोई बात नहीं, ऑल इज वेल। लेकिन जब मेरे पास अल्कोहल का सहारा नहीं था, व्हेन आई डिड नॉट हैव द द शेल्टर ऑफ अ सेडेटिव, तब मेरे को ये सारे इमोशंस बहुत फुल स्ट्रेंथ में महसूस होते थे। सो आई वाजंट फीलिंग बेटर बट आई वाज फीलिंग ऑल दीज इमोशंस बेटर। सो अब क्या करेंगे? द ओनली escape I knew at that point of time, which was going around in the meetings, was आओ और रोज मीटिंग करो एंड शेयरिंग करो। So that is how my early days went back to where I am right now and back to what my understanding is right now. Recovery is, for me now, recovery is doing what treats the spiritual part of my disease, basically. Spiritual, my mental part of my disease. The physical part of my disease can be broken, but what will keep me happy or what will keep me content, that is where the AA 12 step program will come in। क्योंकि मुझे सिर्फ जिंदगी जो है शराब छोड़ के है, लंबा मुंह, मतलब विद लॉन्ग फेसेस, कंप्लेनिंग कि मैंने सब पे वो कर दिया, क्या कहते हैं, एहसान कर दिया, लोग मेरी कदर नहीं करते, ऑल दिस मिक्स फीलिंग आती है शराब छोड़ने के बाद। बट ये जो प्रॉब्लम है एक ड्राई ड्रंक स्टेट में रहने की, nobody told me about this, but that is what I want to tell all the people here जो आज मीटिंग में आए हैं, फ्रॉम माय एक्सपीरियंस व्हाट आई डिड एंड व्हाट हैपेंड टू मी। सो जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि I was feeling all these emotions better, a whole lot better than when I was in using.
सो किसी ने मुझे बताया कि स्टेप वर्क भी कुछ चीज होती है, तो मैं स्टेप वर्क के ऊपर शुरू किया. एंड very honestly, I don't want to cover up for the things that are going around in the meetings, not just my home group, but a lot of the meetings I've seen that, first of all, steps are suggested, which shouldn't be, because steps are things that will get you, the thing that will get you recovery. Second thing is that the pace at which the step work is done, that is really spread out. मतलब कि बहुत time लगता है लोगों को step work करने के. And if somebody is in pain, I mean, somebody who's just come in and broken the chain of, the physical craving, that person is in, deep shit. Excuse my language. उस आदमी को मरहम लगाने का जो काम स्टेप वर्क ने करना चाहिए, वो अगर 1 साल 1.5 साल 2 साल लगता है उस स्टेप वर्क को करने में, आई डोंट थिंक दैट दिस इज द राइट वे टू डू इट. Also, from what my sponsor has told me and what I've read in the big book, that early in the days, the how the founders did it, it was very quick. I'm sure every one of us would understand कि कुछ दिनों के अंदर ही Dr. Bob and Bill W. and the first few founding members did the step work. And that's how it was supposed to be done. That's how they wrote the big book, and that's how the step work was written, and that is how it was intended to be done. Now over a period of years things have been diluted. बहुत सारी चीज डाइल्यूट हो गई, बहुत सारे outside opinions, outside issue, मतलब the outside experiences आए हैं रूम्स के अंदर, और उन्होंने प्रोग्राम को डाइल्यूट कर दिया, because of which the recovery rate has also come down a lot. I'm not talking about the sobriety rate, I'm talking about the recovery rate. Yeah, of course, I mean sobriety figures भी उस चीज के अंदर हम लोग काउंट कर सकते हैं to some extent. So the way the founders intended this program to be done was very quick. Initially जब मैंने पहली बार इस प्रोग्राम को किया था, I wouldn't lie कि बहुत टाइम लगा था मुझे प्रोग्राम को करने में. It took me like, I don't know, 4 months or 6 months to just get my step 4 done, and it was not a good experience. But I got through it. But essentially, I'm not trying to drag out the story. थोड़ा लंबा नहीं खींचने की कोशिश करता हूँ. I'll try to bring it to the point very quickly. Essentially, what I realize now is that जो effect और जो spiritual experience आना चाहिए प्रोग्राम करते हुए, that can only come when it's done very quickly. So it's just like an emergency room. When somebody comes into the emergency room of a hospital, तो वो बंदा पेन में होता है, उसको हमको टू स्टॉप द ब्लीडिंग, एसओएस में बहुत सारी चीजें करनी चाहिए. That is the step work basically. That's the analogy that I give, and that's the analogy that I've been given by the people who sponsored me, that it needs to be done very quickly. As soon as because if you don't do it quick enough, पहली बात है वो इफेक्ट कम हो जाता है उसका. सेकंड थिंग, अगर बंदा कोई पेन में है, व्हाई डू वी वांट टू इवन ड्रैग आउट दैट पेन. मतलब लंबा क्यों खींचे उस तकलीफ को किसी की. अगर जल्दी से उसका पेन कम हो सकता है, उसको सोल्यूशन मिल सकता है, तो वी शुड डू दैट प्रोग्राम वेरी क्विकली. सो दैट्स व्हाट आई डिड 1 year back. I did the program the way it was intended to be done, quickly. जब मैंने इस चीज को एक्सपीरियंस किया कि किस तरीके से प्रोग्राम किया जाता है, undiluted right from the big book, that is when I experienced that. And that is when I experienced the full strength of the program. I won't go into the details of trying to explain the entire program, because that is something that needs to be understood one on one. मुझे ऐसा लगता है कि one on one बहुत अच्छी तरीके से चीज हो सकती है. But if I had to make one point out of this entire thing, कि
what was my experience when I did it the way the founders intended it to be done, I'd say that I started seeing what the problem is. Basically, problem है क्या? I won't मैं exactly बताऊंगा नहीं क्या problem है, but एक बारी जब ये मेरे जहन में क्लियर हो गई कि ये प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद जो कनेक्शन है मेरा हायर पावर के साथ वो इस्टेब्लिश हो गया. दैट हैपेंस अराउंड स्टेप 4 व्हेन आई अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज, व्हाट इज माय मेन प्रॉब्लम. जब वो कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया मेरे हायर पावर के साथ, तब मेरे को डायरेक्शंस मिलने लग गए मेरे हायर पावर्स. मेरे हायर पावर जो मेरे को बोल रहे थे मुझे समझ में आने लग गया. मेरे हायर पावर की जो इंटेंशन थी मेरे लिए, उसको करने का मेरे पास स्ट्रेंथ आ गया. बोलते हैं कि थ्रू द डे, आई मीन आई अगेन मैं बहुत जार्गन्स में नहीं जाना चाहता, बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता प्रोग्राम के, बट मैं ये बताता हूँ कि थ्रू आउट द डे देर आर हंड्रेड्स, आई मीन आई डोंट नो कितनी सारी चीजें होती है जो मेरे को अपसेट करने के लिए आ जाती है. रिजेंटमेंट होती है लोगों से, कुछ भी हो सकता है. मतलब गाड़ी चलाते हुए कोई गलत तरीके से आ गया, ऑफिस में मेरी बॉस ने डांट दिया, कुछ भी हो सकता है. दैट कैन रियली सेट मी ऑफ. मतलब पूरा दिन खराब कर सकती है मेरा. लेकिन just because I have the program, just because I know what is to be done, प्रोग्राम मेरे को बताता है क्या करना है इस चीज के अंदर. आई कैन स्टे सेम, आई कैन स्टे सेम. मतलब नॉर्मल रह सकता हूँ, एक नॉर्मल इंसान की तरह मैं अपनी जिंदगी बिता सकता हूँ. नहीं तो अगर ये प्रोग्राम नहीं होगा मेरे जैसे इंसान के लिए टू सेट मी ऑफ, मतलब स्पेशली समबडी हु इज जस्ट जो अभी अभी सोबर हुआ है, उस इंसान के लिए अगर इस तरीके के इंस्टेंसेस आती हैं जब वो अभी अभी सोबर हुआ है, रिजेंटमेंट आएगा, फियर आएगा, जो सारी चीजें फुल स्ट्रेंथ में आएगी, टू स्टे sober is going to be very difficult. I mean, is has been very difficult for me without the program. The program tells you exactly what to do, how to handle situation that baffled us. It tells you exactly what to do. So my only suggestion and my only experience that I have to share today is that uh, do, to not to rely on meetings alone, not to rely on just the big book study alone, not to rely on the service alone. All of that is good. That's an that is an essential part, but the program, the step work is the main thing. That is what gets us recovery. वन ऑफ द मेंबर्स जिनसे मैंने बहुत पहले बात करी थी, उन्होंने बोला कि भाई मीटिंग्स आर गुड बट इट डज नॉट मीन दैट यू कम टू मीटिंग एवरी डे एंड डू नथिंग एल्स. वी हैव टू टेक दिस लाइक अ वेल थॉट आउट डाइट प्लान. एंड बहुत लोगों ने मेरे से पूछा है कि आप कितने मीटिंग करते हो, कहाँ मीटिंग करते हो. यस आई डू. मैं कम मीटिंग करता हूँ. मैं हफ्ते में 2 बार ही मीटिंग करता हूँ, एक बार भी मीटिंग करता हूँ. बट वेयर माई मेन फोकस इन इज according to the big book and according to the step work is to do 12 steps, because that is where I will keep my recovery, and that is where what will work for me when everything else fails. That is what the big book says. जब सब कुछ काम करना बंद कर दे, working with another alcoholic will always save the day. So 12 steps के अंदर 12th step, and doing the program the proper way is something that I wanted to share about. That is the difference for me when I'm thinking about sobriety and recovery. तो ये बस मैं सब लोगों से शेयर करना चाहता था that this is the importance of step work. That's it. I think I've spoken enough. Thank you, Smriti. I'm done.